जो नौजवानों के लिए बनाई गई पॉलिसियों और इकदाम की मदद के लिए सरकार आगाही फराहम करता है। प्रोफिट स्टोरेज और सब प्राइवेसी पॉलिसी की आम कर रहेगा हमेशा महफूज रहे। पाकिस्तान भर के नौजवान एआई से चलने वाली सिफारिशात किसी भी जगह किसी भी वक्त ये बहुत आसान और इस्तेमाल में सादा है, जो चलते फिरते आपको नौकरियों, स्कॉलरशिप्स और प्रोग्रामों का जायजा लेने की सहूलत देती है, जिसकी बदौलत मौके से जुड़े रहना कोई मसला नहीं रहा। वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब 4 अहम शोबों में तकसीम है। तालीम, इन महारतों को बढ़ाने और तालीमी आदाब हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स, ऑनलाइन कोर्सेज और तबीयती प्रोग्राम्स तलाश करें। रोजगार, पाकिस्तान में बड़े लोग नौकरियों की तलाश करें और दरख्वास्त दें। सतह, मकान और महारत की सतह के लिहाज से इंतजाम करें और अपनी दरख्वास्तों को रियल टाइम में ट्रैक करें। मशगूलियत, कम्युनिटी के अहम मंसूबों में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लें या वज़ीर आज़म के स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम में शामिल हों, जो ई स्पोर्ट्स समेत मुख्तलिफ दिलचस्पी सरगर्मियां पेश करता है। माहौलियात, ग्रीन यूथ मूवमेंट जैसे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इक़दाम से फायदा उठाते हैं, जो तालीम, रोजगार और दीगर शोबों में उनकी सलाहियतों और हकीकी महारत के दरमियान जाए या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपनी महारतों और अहदाफ के मुताबिक मौके पर जाए एक रोशन मुस्तक़बिल का आगाज़ करें। Ladies and gentlemen, a huge round of applause is kindly तालियां बजाएं इनके लिए। Thank you so much for the lovely introduction. I begin with the name of Allah, the most merciful and most compassionate. My name is Zarka Khan and I belong to Lukpur Madan. I am associated with the Prime Minister's Youth Program where I proudly serve as a member of the Prime Minister's National Youth Council. I extend a warm welcome to our highly respected leaders in the Maqam side and I sincerely thank him for visiting my hometown for the welfare of our youth and young women and for bringing such a meaningful program to our city, the laptop distribution ceremony. I also extend my deepest gratitude to the honorable teachers and my heartfelt greetings to my dear brothers and sisters and the youth of Khyber Pakhtunkhwa whose energy and resilience and talent define the future of Pakistan. Today we have not gathered here merely to distribute laptops, but we are here to shape futures, to unlock potentials and to empower a generation. Because the youth of Khyber Pakhtunkhwa and this nation are the greatest strength. With this very vision, Mia Mohammad Nawaz Sharif in 2018 launched the Prime Minister's Youth Program, laying the foundation for a youth-centric developmental agenda. Today, under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, Chairman Rana Mashood Khan, Engineer Amir Maqam Sahib, this program has been revitalized, it has been strengthened and aligned with a clear national direction. As we saw in the documentary, this direction is clearly reflected in the 4 E's, which are principal to the Prime Minister's National Youth Program. It revolves around education, around employment, around entrepreneurship, and around environment. And we hope that the laptops that you receive today are a gateway to all these 4 pivotal points of our program. For the youth of Khyber Pakhtunkhwa, this means access without barriers, opportunity without discrimination, and progress based on merit and talent. At the core of the program are the true foundation of national dignity, worthy guests, respected Vice Chancellor, esteemed faculty members, and my dear fellow students, Assalamu Alaikum. Today is not just the ceremony of distributing laptops. Today is a ceremony of trust. Trust in students, trust in education, trust in the future of Pakistan. The Prime Minister Laptop Scheme reflects a powerful vision, a vision where students are not considered as
I am deeply honored and sincerely grateful to the federal government of Pakistan for awarding me the Prime Minister's laptop. This initiative is not merely a device, but it is a symbol of trust in students and an investment in the future of our nation. As leadership is about creating opportunity, I extend my heartfelt thanks to the PM Mia Mohammad Shehbaz Sharif for empowering youth through technology and education, gives the youth the tools and they build the nation. I assure you that I will utilize this opportunity with responsibility, integrity and dedication. At the end, I say, thank you Shehbaz Sharif, मैं हूँ आपका विजन, मैं हूँ बाइख्तियार नौजवान, मैं हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद. Give a huge round of applause for Mr. Khan. Globally to different organizations and working with the United Nations, it paved I couldn't have and in my path. So, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif. Ladies and gentlemen, the Prime Minister Youth Laptop Scheme. This program reflects a broader youth-led vision where technology and considered as a fundamental driver in learning, innovation and national development. You will now witness a documentary of the Prime Minister's Youth Lab. So kindly, the documentary. जो 2011 में शुरू किया था उसको 12 तक पहुंचाएंगे और हर बच्चे और बच्चे को लैपटॉप के Excitement we've seen. So a huge round of applause for yourself once again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतहाई काबिल इकराम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब वाइस चांसलर अब्दुल बिहार यूनिवर्सिटी, इसके साथ मेरा पहले भी यूनियन की हुकूमत से पहले शायद खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब को निकाले जाने के बाद उस ज़माने में भी हम कोई कोआर्ड गए, उसके साथ काफ़ी नशिस्त हुई. इसके अलावा ये मुख्तलिफ जगहों में वाइस चांसलर हज़ारा में भी उसके साथ बातचीत होती रही. और बड़ी खुशी की बात है आज जिस प्रोग्राम के लिए हम आपके सामने मौजूद हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम प्राइम मिनिस्टर और दूसरी इसका भी ये हिस्सा मुख्तलिफ मौक़ों पर अपना एक देते रहा. इसके अलावा मेरे जितने डीन साहिबान हैं, टीचर साहिबान हैं, और ख़ास कर मैं ये कहूँगा जो आप हमारी मुस्तक़बिल इस मुल्क को चलाने वाले तलबा और तालिबात और साथ साथ हमारी
سامنے. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ایک اسی موقع پر جو پاکستان کی مستقبل یوتھ کے سامنے مخاطب ہو، اور وہ بھی اس طرح موقع پر کہ کچھ دینے یا آیا ہو، تو میرے بڑی اعزاز کی بات ہے. میں اپنے تقریر کو آگے جانے سے پہلے آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت زیادہ کامیابیوں اور خوشیوں کا سال ثابت ہو پاکستان کی. میں اس کے ساتھ ساتھ نئے سال کے ساتھ جو پچھلا سال 2025 گزر گیا، تو اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہی دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک تاریخی سال رہا، اور اس کی مین جو دو ایکٹرز رہے، میاں محمد شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایز آرمی چیف، ان کا دونوں کے بنیادی کردار، رول اور دن رات محنت سے 2025 واقعی ایک تاریخی سال رہا پاکستان کے لیے اور ہر ایک پاکستانی کے لیے، کہ وہی اپنے آپ سے یہ ٹائم کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ جذبہ ڈی سی صاحب سب سے ملا. میں اس کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہی کو آنا ہے اس ملک کو ٹیک اوور کرنا ہے. یا ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات نہیں دیکھے، اپنے ملکوں میں مہاجرین بھی بنے، دہشت گردی کی جس طرح انہوں نے فیس کیا ایک تاریخ کا حصہ ہے، مگر پاکستان کا دفاع کیا. پاکستان Member of the Provincial Assembly Malik Tariq Awan and former MPA and General Secretary PMLN Mardan Mr. Jamshed Mohammed. By Mr. Suresh Kumar, Member Provincial Assembly. Nurule Department of Biochemistry, kindly receive your laptop from the worthy chief guest. Ms. Zarqa Khan has also joined us. Thank you very much. Mr. Naeeman. Mr. Shah Faisal, Department of Computer Science. Mr. Musa Khan, Department of Law. Mr. Musa Khan, Department of Law. Mr. Musa Khan, Department of Law. Ms. Nazia Hadi, Department of Biochemistry. Ms. Institute of Business and Leadership Studies. Ms. Rubina Mashook Ali, Department of Palwasha Noor, Department of Law. Ms. Palwasha Noor. Ms. Marwa Ahmed Jan, Department of Law. Department of Political. Mr. Jamal Khan, Department of Journalism and Mass Communication. Mohammed Kaif, Department of Microbiology. Attas, Department of Computer Science.